Hello, sir. Good morning. Okay, hi. Hi everyone. I'm audible. Okay, so hi, this is Prakhar. I'm currently a third year chemical engineering student, but have particular interest in machine learning and AI. So I'm currently head of product and co-founder at Genher Technologies Private Limited, and we have a product called Genher. It's an app which is mainly focused on women's healthcare. So like from starting from like first period to menopause, it covers everything like everything that revolves around women's healthcare. So um, yeah, so the problem we are solving actually is comprises of so many things. So like there is a gap between market and product where we are looking to
fit our product. Like so many apps are available on the Play Store, but they don't really target the tier 2 or tier 3 audience. Most of them target like the apps like Flow or Clue, which are from Western world. They mainly target in tier 1 city, but like 80% of the uh, like women don't use any kind of period tracking apps or something like that. So the like semi-urban and rural areas, there is nothing. So we want to place our app for like tier 2 to tier 3 cities. So lack of accessible. What we do is like we solve all everything like consultations is on our app and period tracking is on our app. And like if you want to buy a product, it could be anything related to like women's healthcare. So everything is on our app. Currently, we are using APIs for that, but we are looking to launch our own product so that we could generate much more revenue. So when we started this, before starting this, we conducted a survey that is there a need of such kind of app or we are like are doing something wrong. So we conducted a survey throughout our college and a few other colleges like CSMU. So we conducted offline and online both surveys. Currently on our Google form, we have like 300 plus responses. And in offline, we have like 150 plus responses. So we talked with a lot of women and they told us that yes, there is a gap. Like they don't use any kind of apps for like period tracking, but there's need. Like so yeah, that was that. And then we come up with a solution that is this. Like everything that covers our app, that like irregularity alerts, smart tracking, expert care, and health guidance. So we have almost developed an ML model that gives all predictions based on the basis of that uh, pre-trained data set we used. Like that is a small data we have used, but we are training our LLM model for that to give more accurate and more precise predictions for health. And we are currently working on that. And we have almost developed our MVP. Not almost, we have developed our MVP, and we are looking to launch it around like 20 of August. So that covers all those things except the consultation part. We currently have 4 doctors on board, but we're looking to at least have 10 to start a consultation part. And these are the key features that we are covering, like consultations, AI power tracking. AI is a buzzword, but we are actually developing it from scratch. We are not looking to use any kind of APIs for that. We are developing everything from scratch. That's one thing. And then another thing is like maybe we could use few APIs like that covers some health search engines or things like that. But the ML part is we are doing it on ourselves, like the LLM and other things. And this is the market side. Like according to the Femtech Insider India, the women's healthcare is projected to be around like $40 billion industry in 2030. Like it's growing and like compound annual growth rate of like 80.5, if I'm not wrong. Yeah, it's around that. And in world, it's around like $200 billion. And the first unicorn in the women's healthcare in the world is like Flow. They have raised around $200 million in 2023 at a valuation of $1.2 billion. And yeah, after that, I think Animesh will continue about revenue model. Animesh, are you there? Hello. I will show this. Yeah. So this is. Acha. So I am audible. Yes, you are. दिस इज एक्चुअली ये हमारा रेवेन्यू मॉडल है जो कि ब्रांड पार्टनरशिप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स एडवर्टाइजरमेंट जो हमारा प्रीमियम फीचर्स होगा जेनेर के उसके ऑनलाइन गायनेक कंसल्टेशन एंड प्रोडक्ट मार्केट प्लेस। अगर इंडिया में हम बात करें तो हमारे माया एशियन पीरियड ट्रैकर ओकाया सिरोना दीज आर द कंपटीशन। ग्लोबली बात करें फ्लू क्लो एंड मेनी मोर। ये हमारा स्केल करने का पूरा वो है कि हम B2B, B2C, ऑफिशियल पार्टनरशिप, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमारा ऐप पहले से प्री इंस्टॉल करके गवर्नमेंट कॉलेज के साथ पार्टनरशिप, टारगेट यूजर एंड जो आयुष्मान भारत के डिजिटल हेल्थ मिशन कवर कर रहे हैं उसमें भी हम लोग कवर करेंगे।
ये हमारी टीम है राइट नाउ। प्रकार, मैं, डॉक्टर ऋषि एंड वन मोर सीएमओ फ्रॉम डॉक्टर श्रुति। Hi, राइट Avnesh. नाउ ये हम Hello. Hi, Avnesh. I am Amit Gupta. जी। I ask one question. Please reverse on third page. आप तीसरा पेज ओपन करिए जो आपने कंपटीशन ऐप दिखाया था। राइट, इस ऐप में कितने डाउनलोड्स हैं? काइंडली ऐड ऑन दिस। सर एक्चुअली फ्लो की अगर बात करें तो फ्लो के इंडिया में अगर हम यूजर की बात करें तो वो 10 लाख के आसपास है। 1 मिलियन आई थिंक। इंडिया में, हाँ, द इंडियन ऑडियंस के लिए 10 लाख, 1 मिलियन। और सर जो माया है इनके इस फ्लो से ज्यादा है, अराउंड माया के इस समय इंडिया में अराउंड 15 लाख के आसपास होंगे। ओके, नहीं, हाउ कैन गेट 15 लाख इन माया इन इंडिया या अदर कंट्री? कैसे आपने इसे डिसाइड किया कि माया जो है या फ्लो है ये इंडिया में ही 10 लाख है? नहीं, हम इंडियन ऑडियंस की बात करें, ओवरऑल अगर फ्लो की बात करें तो फ्लो के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। अराउंड 5 करोड़ के 5 से 7 करोड़ यूजर्स हैं। ओके, अभी तो मैं इस पे एक बार ऐप को चेक करके। नहीं तो मेरे ख्याल में जो ये कहना चाह रहे हैं अमित जी, कि इसमें ना आप ना सोर्स जरूर दिया करिए, क्योंकि हाँ, राइट। इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन के लिए सोर्स का होना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपने बोला कि 1 मिलियन है इंडिया में, 5 करोड़ ओवरऑल है, लेकिन उसका कोई बेस नहीं है। अगर बेस है तो नोबडी विल क्वेश्चन, पीपल विल से ओके दिस इज ऑथेंटिक, कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स एंड दिस इज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। या ये प्लीज श्योर कैरी, सर। या प्लीज कैरी। राइट नाउ ये हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, हेल्थ कैंपस, ऑरेंज रीड, बियॉन्ड वर्थ एंड पीसेफ। सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट था। तो जी। अभी हमारी एप्लीकेशन पे कितने यूजर हैं ये शायद मैं मिस कर गया। कंपेटिव मैंने राइट समझ लिया आपसे हैं। राइट नाउ सर, हाँ, हमारा जो ऐप है वो भी बीटा टेस्टिंग में है। हमने अभी प्ले स्टोर पे लॉन्च नहीं किया है। ओके, ओके, प्ले स्टोर पे लॉन्च नहीं किया, बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं अभी जी। हम। जी। लेकिन हमने ऑलरेडी हमने कुछ पार्टनर्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं, लाइक पी सेफ एंड अदर्स, राइट? जी। तो वो उनका क्या रोल रहता है इसमें? पार्टनर्स कर लिए हैं, दे प्रोवाइड टेस्टिंग किट्स, और हाउ दे आर हेल्पिंग यू? एक्चुअली सर जो पी सेफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ऐप पे हम लोगों ने भी उनके प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है एक्चुअली। ओके, 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 तो यहाँ से हम ई कॉम भी कर रहे हैं क्या? हाँ ये सर, जी सर, हमारा मार्केट प्लेस भी है फॉर ओके, फेमटेक प्रोडक्ट्स। ओके, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा अपना टैग, में एक बार देख लूंगा, बिकॉज आई जी वाज ये सर। या आई एम सो सॉरी। हमने से हाँ बीटा टेस्टिंग के लिए हमारी ईमेल आईडी एक बार ऐड कर दीजिएगा। आई विल चेक ऑन योर ऐप। जी मैं आपको ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। ये सर, श्योर। एक बार मैं चेक करके आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। जी। Okay, so there is a question by Purushottam sir, like he's asking, like only for the women's health, especially in menstruation. So it's around like $600 million currently, like in 2025, and it's having a compound annual growth rate of 18.6. So it could like it is increasing rapidly, like people having smartphone access in tier two cities, so they are more open to the, like it's mostly like a category creation business in tier two and tier three cities. Like people need to know more about these things. Like there's no trend or something like that currently. Okay. Parkar, thanks for answering my question. एक question और है मेरा. Sure. This topic is still a taboo, not only in rural, but still in tier one and tier two cities also. So, what would be our marketing plan to promote this particular, I would say, application? Because this is not a application, but this is a the way we treat the women healthcare in India, especially this sensitive topic. So, what would be our plan? Whether we would be going through some sort of, I would say, uh, like different kind of, I would say, marketing, different kind of push. So, what would be your like high level marketing plan?
Currently, sir, we are looking like in the MVP plan, like we have our 3 year plan. If you want, I can show that too. Uh, just a moment. I'll show you that. Like in MVP phase, we are like having 3 to 4 months. We want to target like all universities in Kanpur and nearby cities, like in Lucknow and nearby cities. So what we are doing, we are only targeting like age group between like 17 to 23. That covers all students, like girls students in all universities. So we are tying up with there and promoting period. And currently, we have applied for few grants. Like recently, we got a grant that is around like $200, but it's still like we got funds for like promoting app on Play Store. So recently, CSJMU gave us $200 for launching app, and we are in talk in our college. Like they are giving us 90K in exchange of 2% equity. That will be the valuation of 45 lakhs. So if we will get that, like hopefully, like in 1 or 2 months, we can like promote it in all the universities in nearby, like close to Kanpur or maybe Kanpur. Okay. So initially it will be a direct kind of interaction with the end user, so that they can first they can get a comfort and then start using this application, right? Yeah, Okay. Okay. Good. Thank you. it's more like a testing period for us. Like we are in third year, so we want like Yeah. Yeah. things to It's be still solid. in the beta phase only, right? Yeah, yeah, Okay. Good. Thank you. Hope you're taking care of user data which is secure, right? There is no yeah. leakage. Because there is a lot Like of personal data which is coming to your platform. yeah. So we are implementing our DISHA Act, that is the Digital Information Security in Healthcare Act, and Ayushman Bharat Digital Healthcare Mission. That they like all the data is on like protection with the help of like ABDP, that is ABDP, ABDP Act. That is like they are giving like startups to promote in like digital health. So like most of the data we can use for like only for startup we can sell the data, so that we have to get from the government. Yep, there are a few questions. One sec. Okay, I mean that first one was definitely about data compliance. DPDP is coming in, right? So I hope you understand this. This is going to be much more complicated because personal data and health data. You're going to Yeah. keep both of the data, so it's extremely, extremely important to handle that. Otherwise, but how do you see that as a risk? Actually, what happened like the last year, Flow, the biggest player in this category, Mhm. uh, was summoned by like US government. They sold their data to Google, but at the end of the case they won that case. Like in their privacy policy they mentioned that they can use their data, like users data, for training their own ML model or anything that they are building for the people. So that's like a loophole, or maybe something we can work on with the help But of but government. but you're going to launch in India, right? So Yeah, those kind of clarity on data compliance and everything yeah, is not there in India, yeah, right? So even you talk about Disha is not very well defined. DBDP yeah, still is in process. So yeah. and all the codes and everything, if you see, right, they don't understand digital landscape and they usually challenge a lot in that case. True. Importantly, the one other risk I see is because you partially are thinking about getting into the areas which is where this kind of topic itself is taboo, right? You might have a Mhm. brand risk because some of the local players who don't like these kind of situation, right, they can play with Mhm. this. Have you guys thought about it? Yeah, like I know, like there is like even it's a taboo. Like when we started, it was a taboo. Like people don't like the idea. They were like, it will not work. And in 4 months, we have our own MVP app. We have initial funding to launch our app. So I think we are on the right track. Like people will come and like they can only like question is will it is work. When Paytm was started, the same concern was that like there is a category business. So if you will able to create the business,
then will be users. So it's all about the users. This is a push product. So like it will sorry, this is a pull product. Like people need that thing. Like peer tracking will always be there. If it will not be done by Jenner, then it will be done by some other app. But this will be done. Like as That's true. That's I, true. But I'm pointing the point where your competitor will take advantage of this kind of taboo situation in some of the area and some of thing going out of hand, sure. right? So Yeah, they I can. will tell you a story. Mhm. Recently, we have a investment meeting with a 600 crore company that is PSafe. If you heard about, it's one of the largest in feminine health. So Mhm. they asked us to acquire the company. Like they told us that you should work for us and we'll buy your whole Absolutely. channel. Yeah, yeah, yeah. But but we told them the same thing that we want to build this thing for people. We don't want any other level. So we will do it by own self. There will be competition, and we are looking to tackle that. Like hopefully, I mean, like we're in the third year, so this thing. If this will not work, we will pivot. Hopefully, No, it's a good idea. Trust me. I mean, I think that there's a lot of scope in this, right? Because you're getting into a place where it's not just one thing, right? There's a lot of mental health related to that, and that whole space is still very. I mean, if you talk about medicine, it's yeah, very different compared to that, this space, right? And you can. There's a lot of place to help that. I think women and yeah, across generations, right? uh, So there's good spot. yeah. Mental health was also like our one of the pivot idea. If things didn't work well, then we will go into the mental health. I mean, it's required. Yep, yep, yep. So, what you guys are looking for? I mean, I understand you're presenting. Is there any specific ask from this group, or just awareness? Yeah, so we're looking for a funding. Like we have $200 in funding, so we have to sustain Google Play Store and feel like we want to host it on AWS. So we have made a budget that was around 30,000, but we got only 15,000. So that was one thing we were looking for. We have talked with few people that like we have established our own company by our own money. Like we have a pocket money that's around like 4 to 5,000. So that was one thing we were looking for. And of course mentorship. Like we need a like tech expert. We talked with Rajat sir actually few months back, and he told us that it's a good idea. You must work on that with full efficiency. Yep. I'll be available for any technical support you require. One question is, do you have a roadmap on AI? Because I think Yeah, there's a lot of value when you actually we drive have this with a AI, right? yeah, yeah. We Okay. actually do have a roadmap, but we are still in development phase. We don't want to integrate AI with the within the like MVP phase. So we want to start that phase after MVP. That's why we didn't mention anything regarding that. Okay. So, Prakhar, so there are a few things. You said, you're looking for some fund for AWS and others. See, if you are already incubated if you have a legal entity, you can apply for AWS fund. So they provide. I got $5,000 AWS fund, which helped me to sail for 1 to 2 years, and then I Yep. applied in Azure. They provide 150K USD. So it will sail you for another 2 year. So so look for your those options. Don't say Yeah, for this. And then the other thing is uh, if again if you're incubated, so recognized with DPIT, then there are so many grants available for certain things. So you may get funds for 20-50 lakhs also. And don't just sell your equity in the starting. That's what I want to say. Utilize the different avenues which are available wisely, and I'm sure this group is there to help you or to guide you. Yeah. I second to the previous comment. I mean, I know a startup who is basically they are jumping from Google to AWS to Azure. 6 years. That's what they are going to run without any cost on infrastructure. But the architecture and everything has to be more you know less cloud dependent. So that you can move from one to other. Otherwise, usually when they use very strict
AWS services or cloud services, then they get stuck with those services. So probably a little bit of uh, interoperability. If you implement in those, then you can move it from one cloud to other cloud, and you can have at least 6 years now from now, and good amount of time and good money that you can save in that run. Yeah. Yeah. I think once you have money, then you can go to anyone, Yeah, right? It just starting you need to wisely utilize your resources, right? yeah. I mean, Uh, if you have questions or you want to talk, I mean, I think Yeah. we can definitely hop in and see how we can help. yeah, we actually applied for few grants, but it will take around like 1 to 2 months to get the funds into our company's account. Like they have a 1 to 2 months process. Whenever we go to them, they told us like we have a Is it? process. Are you talking about government or are you talking about these cloud providers? It's about government. Like, No. So in the other cases where you can save a lot on your cloud infrastructure, because these guys give free credits to startups, and that's why I said if you sure, need we'll any apply help, for. then we can. And I'm sure somebody have said they Yeah, tried, and That we can is do that. available for anyone and everyone. Yep, yep. Yeah, that is available, as well as you can also start with free tier. Free tier is available. So you can start with free tier at least for now. Hmm. Currently, we are using a free tier. So yeah. Yeah. Okay. And one more suggestion from my side. I'm not sure how many women student, girl students are there in HBTU. Uh, I think if you consider all the courses, and then probably if you get 50% of adoption, I think that will you know you will test the water from this sample set. So try to bring them on your platform. I think that will be the biggest testimony from your own institute. Yeah, yeah, sure. It's a good one. I think it'll work out. You just need to go right. Yeah, Bobby sir. Yeah, yeah. It's that. Yes, sir. Yes, sir. See my screen? Hello. Yes, sir. We are developing a multiple types of apps. Well, I have introduced myself. I'm Amit Gupta. I have current, I have done MCA 2015 batch in HBT Kanpur. I 8 year experience in mobile app development and SDK development. Currently, I have moved in own mobile apps develop. हमारा विजन ये है कि हम मल्टीपल टाइप्स का ऐप बनाएं और उससे रेवेन्यू जनरेट करने का हम हमारा विजन है। उसके लिए हमने मल्टीपल 4 या 5 टाइप्स का ऐप्स अभी डेवलप किया है, जो प्रेगनेंसी कैलकुलेटर ट्रैकर ऐप है, फाइंड फोन बाय क्लैप्स विद साउंड्स है, लिटिल लर्नर ऐप, सिनेमा ऐप एंड पॉकेट रेसिपी इज माय ड्रीम ऐप्स एंड रिसिप्ट ट्रैकर। इन 2 apps are development और 2 apps are generate revenue by ad mob. I will check on another revenue generate model from ad mode to another. अभी करंटली हमारी ऐप जो डाउनलोड है 2K प्रेगनेंसी कैलकुलेटर और 500 प्लस फाइंड फोन। अभी सब जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम ट्रैफिक जनरेशन चैलेंज है, जो हम ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल टाइप के कंपटीशन ऐप है, हम उसमें अपने ट्रैफिक जनरेट का सोर्स या तरीका आई डोंट नो, मुझे नहीं मिल पा रहा। आई फाइंडिंग द मेन सोल्यूशन कि हाउ कैन जनरेट अ ट्रैफिक ऐप ट्रैफिक। काइंडली सजेस्ट
all of you? How can generate the traffic? Yes, sir. It's the same. One main problem mentorship play traffic generation, sir. All right, sir. Ah, sir. I can say I one second, sir. सर प्रेगनेंसी कैलकुलेटर ऐप है। इस ऐप में 4 या 5 टाइप्स के फीचर्स हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को डे 1 पे ट्रैक करती है। डे 1 से ट्रैक करके उसे कैलकुलेट करके कितने दिन का बेबी हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ ट्रैक करके उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन सर हम सेंड करते हैं। उसके बाद इसमें एक फीचर दिया न्यूमेरोलॉजी नेम। न्यूमेरोलॉजी नेम में ये फीचर होता है कि आप बच्चे का नाम क्या सजेस्ट कर रहे हैं सोच पे, उस पे ऐड करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे सर बच्चे का न्यूमेरोलॉजी एक प्रकार से सिंपल आपको तरीका मिल जाएगा। फिर इसमें है वीकली फोटो फ्रेम। वीकली फोटो फ्रेम वो वर्क करता है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी कितने मंथ का है, आप उसका फोटो कैप्चर करके आप सेव कर सकते हैं। और इसमें प्रेगनेंसी आइटम एप्स है। ये ओनली प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐप्स है। और दूसरी ऐप जो सर मेरी है ये है फाइंड फोन बाई क्लैप। ये ये ऐप वर्क करती है अगर मान लीजिए आपकी फोन आपने ऐप इनेबल करके आपने किल मोड में छोड़ दिया है और आपने आपकी फोन मान लीजिए आपके रूम में कहीं मिल नहीं रहा, आप क्लैप करेंगे तो फोन ऑटोमेटिक रिंग करेगा, उससे आपका फोन मिल जाएगा। ये इस ऐप का फीचर है। हेलो। I I think Amit, I tried to install this app, and 2 or 3 days afterward, I got a message from Google Play that this is not safe. I hope you got a chance to look at that. Please, I have sir, I have multiple bugs are occur. I have I updated don't the know. I mean, new version. I mhm. will check with. हाँ मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मैंने ऐप आपने जब बोला डाला था मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाउनलोड किया ट्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज हार्ड टू यूज Hmm. क्योंकि मेरे को समझ में आया क्लैप तो है लेकिन उसमें अदर ऑप्शन थे और मैंने ट्राई किया बिल्कुल काम नहीं किया नहीं नहीं दूसरा सर। कि 3 दिन बाद again this is user experience that is struggle right and you might have made with a very clear understanding I'm telling as a user it's just a Yeah. feedback right दूसरा के 3 दिन बाद मुझे एक गूगल प्ले से मैसेज आता है कि दिस इज नॉट सेफ ऐप वुड यू लाइक टू डिलीट दिस और रिमूव दिस आई Okay. थिंक if you are building and you need to be careful about your audience these two things are very important. Okay, sir. I will check. Ah, sir. Right, sir. Yes, sir. I mean, can I suggest one thing? Yes, sir. Maybe you can create a meeting someday and then put a meeting link and see how who wants to join that. I think it'll be good if you work with all of them and figure out what are the actions, and based on action, you can work with the mentors, right? So, for example, let's say you do 1 or 2 brainstorming sessions, and जहाँ पे आपको पता चल जाएगा चलो ये 2-3 चीजें तो मुझे करनी है अगले महीने के अंदर, right? And then you know who can guide through that, right? Will that work for you? Yes, sir. Of course. Thanks.
Yep. ठीक है सर। ओके सर। ठीक सर। राइट सर। Yeah, Bobby sir, can I add one thing? Uh, अमित, यस सर। पहले तो ना आप प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज जैसे बॉबी सर ने भी इंडिकेट किया था, शुरू में मुझे समझ ही नहीं आया आप क्या करना चाहते हैं। आप यस सर। 1 मिनट के अंदर इधर से उधर चले गए। तो एक बार प्रेजेंटेशन शेयर करिएगा तो वो बेटर रहेगा। हो सकता है आपने किया हो, मैंने मिस कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो उससे क्या, और थोड़ा सा ना फोकस करिएगा एक दो उसमें, क्योंकि आपने बहुत सारी एप्स बनाई हुई है ऐसा लगता है। यस सर। और जैसे अभी पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा, जितना भी मैंने देखा उसमें देखा था, वहाँ पे मार्केट साइजिंग थी, कम्पिटिटिव लैंडस्केप भी उन्होंने किया था, उन्होंने एक थोड़ा सा रोड मैप बनाया था अपना, और अपने लिए एक निश प्रॉब्लम बनाई थी जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो सिमिलरली आपको भी, आपने भी किया होगा आई एम श्योर। अब उन चीज़ों पर पकड़ के रखें, आई एम श्योर माधवेंद्र विल मेंटर यू। एंड तो कोशिश करिए एक एक चीज़ों को सॉल्व करने की मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके उसको आगे बढ़ाइए। 3 4 5 डिफरेंट एप्स की बात करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा लग राइट। रहा है कि आप ऐप स्टोर ही खोलना चाह रहे हैं फिर तो, नो सर। है ना? ऐसा नहीं होगा आपका ना। नो सर, हमारा मेन जो ड्रीम ऐप्स है वो है पॉकेट। लाइक एक पॉकेट ऐप है, एक ऐप है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो मतलब शेयर है। हमारा ऐप है पॉकेट रेसिपी। जितनी भी भाई रेसिपी बनती है आजकल, महिलाएं जो भी यूट्यूब पे आप रेसिपी की वीडियो देखते होंगे सर, वो सब यूट्यूब पे जितने हैं, मैं उसको एक ऐप पे लाना चाहता हूँ और वो ऑफलाइन चले, ना कि ऑनलाइन। अब देखिए, आपने तीसरी ऐप की बात कर दी। आपने पहले प्रेगनेंसी की बात की, उसके बाद वो क्लैप नहीं फाइंडर, सर, मैंने ये अभी ड्रीम तीसरी। ड्रीम ऐप की बात की। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तीसरी ऐप हाँ की सर। बात कर दी ना। तो बहुत ही एम्बिशियस आप कर रहे हैं। सॉरी लेकिन सर। आप एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड अगर आपने कुछ डेक बनाया है, पिच डेक किसी भी तरीके का, वो शेयर करिए, राइट? फिर यस सर। if I can participate in you some kind of guiding, I'll be more than happy, but फोकस रहना बड़ा जरूरी है। मैंने मतलब यही सीखा है, तो यही मैं आपको भी अभी गाइड करूंगा। श्योर सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, everybody. श्योर सर, विल डू। Hey Mac, Ashwani here. So, hey, तो इसमें एक, एक, एक क्रूशियल एलिमेंट जो मैंने नोटिस किया ना, वो ये है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें आप एक, 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 एक,
तो मुझे लगता है कि हमारे HBTI के जो लोग हैं ना, अभी वो जो माइंडसेट में फंसे हुए हैं कि मैं इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं, राइट? आई थिंक एवरीबडी नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद कि वो किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू फाइंड योर स्ट्रेंथ, आप कहना क्या चाह रहे हो। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो आप इंग्लिश में बोलिए। पर अगर आप अपनी ऐप के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू टारगेट योर ऑडियंस। अगर आप यूएसए में कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, देन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडिया में और इंडियन लोगों के बीच में बैठे हैं, देन यू स्टार्ट विद हिंदी। आपकी जो ऐप, जो आपका आइडिया, वो आप क्लियरली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं। बिकॉज आई सॉ दैट इनिशियली यू वर स्ट्रगलिंग कि मैं आइडिया को कैसे मैं प्रेजेंट करूं। आइडिया जितना क्लियरली आप प्रेजेंट करेंगे ना, लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करती। कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि मुझे इंग्लिश में बोलना है, डोंट डू इट। मैं जब HBTI में फाइनल ईयर में था, हमारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। मैं भी यूएसए में पिछले 25 साल से। तो उस टाइम पे हमारी क्लास में मोस्टली जो लड़के थे उन्होंने इंग्लिश में प्रेजेंट किया था, जितना भी टूटी फूटी से स्क्वायर थी वैसे। सो मेरा आइडिया तब ये था कि यार मुझे सेमिनार जो देना है फाइनल ईयर का, वो मैं हिंदी में दूंगा। आई वेंट टू द स्टेज, वो टीचर बैठे थे, आई स्टार्टेड विद हिंदी फ्रॉम देयर ऑन। मेरा आइडिया ये था कि यार मुझे आइडिया सही से प्रोजेक्ट करना कि मैंने सेमिनार किस पे तैयार किया, मैंने प्रोजेक्ट किस पे तैयार किया है, वो कम्युनिकेट हो जाएगा। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी हमारी क्लास में द मोस्ट एंगेजिंग सेमिनार वाज दैट वन बेसिकली, जिसमें कि पार्टिसिपेट हुआ, कि सभी ने क्वेश्चन पूछे। अदरवाइज जो इंग्लिश में बोल के निकल गया, आधी तो लोगों को समझ में भी नहीं आया। तो अगर आप आइडिया सही से, ये तो पहला एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ एज ए पार्टिसिपेंट के। सेकेंड वन ये है कि आप जब आ रहे थे ना स्टार्टअप में, वो दिखाने के लिए आपने पहले ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी उनको कि मैं ये चाहता हूँ, और उसके बाद पॉज आ गया बहुत ज्यादा। तो अभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि हम सजेशन क्या है। देयर आर लॉट मेनी ईगर पीपल हियर हु वांट टू हेल्प यू, पर उन्हें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई कि आप सजेस्ट क्या करना चाहते हैं, आपकी स्टार्टअप क्या है, कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस करना चाहते हैं। इंस्टेड यू आर टेलिंग कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम बाद में आती है। फर्स्ट यू नीड टू मेक पीपल इंटरेस्टेड कि मैं इस आइडिया में इन्वेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। तो वंस यू क्रिएट दैट डोमेन जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं, देन यू से कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसमें मुझे यहाँ हेल्प चाहिए। सो यू शुड हैव मेड ए 5 और 7 मिनट ऑफ ए प्रेजेंटेशन। और मेरे ख्याल से मयंक ने आपको हिंट दिया काफी बार, तो मैं थोड़ा सा ब्लंटली आ रहा हूँ, सो आई एम सॉरी। राइट, मैं ऐसा किसी को स्पॉट पे डालने का नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल एवरीबडी हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू मेक द प्रेजेंटेशन, हम इस प्रेजेंटेशन को और बेटर बनाएं। क्योंकि ये आपका इनिशियल ग्राउंड है जहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं कर रहा, बट वंस यू गो आउट ऑफ दिस डोमेन, ये जो अपना सर्कल है जो HBTI का हम लोग हेल्प कर रहे हैं, वहां पे लोग आपको जज करेंगे। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, जब आप जाके किसी के सामने बोल रहे हो, आप हिंदी में स्टार्ट कीजिए। मेरी स्टार्टअप ये है, और हम लोग ये काम करते हैं, और हम ऐसा कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, और हमने ये काम आज तक किया है। ये तुम्हारा स्टार्टअप होना चाहिए। देन यू गो से कि यार मेरी प्रॉब्लम इसमें ये है, आप लोग मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं। If that's how it happens, then you might be getting a lot more better response, और काफी अच्छी आपको सजेशन मिलेंगी और हेल्प भी आप क्रिएट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से लोकेश ने भी एक पॉइंट ये बताया था, आई थिंक लॉट मेनी अदर पीपल एड्रेस दैट। आपके पास काफी आइडियाज होते हैं, बट फोकस ऑन वन आइडिया। आप जिस आइडिया को लेने चाहते हो उस आइडिया को आप स्टार्ट करें और एंड तक लेके आएं, बाकियों को भूल जाए आप। सेकंड चांस में आप उसको लेके आए वन बाय वन। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लैप वाले में इन्वेस्ट करें या प्रेगनेंसी वाले में इन्वेस्ट करें। राइट, तो आप एक आइडिया को लेकर चले, एंड में जाएं, और उस आइडिया के ऊपर लोगों को सेल आउट करें कि मैं इसमें चाहता हूं, यहाँ मुझे हेल्प चाहिए और इसकी है। अगर मार्केट आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, अभी क्लैप वाले में चाहिए, प्रेगनेंसी में चाहिए। So I was listening and all that. I joined late bit, right? But I wanted to give my 2 cents into it. So I hope it will help you.
Sir, I am interested. So I'll share the presentation, just 1 minute. So my screen is visible. Yes. Oh, yeah, thank you. So hello, actually this is Nukul Gupta. So I did my computer science BTech from HBTI in the year 2015. I got pass out. So from the beginning, like I was very much fascinated about computer science. I wanted to do some innovation. So now this I have made one project. That's the project Netra. It's a computer vision solution, and I feel like this is something. It can be very big. So the idea is very simple. Like everybody is using CCTV camera, but in reality, it is a dumb. Why it's dumb? Because it's just recording the things, and any event occurred, I have to go back. I have to scroll through, like scan through the frames, and reach to that location. Like it's like very dumb. Now we have AI. AI will make my life very easy. So we have basically built a solution wherein no need to touch the hardware. Existing CCTV setup is there. We can very easily integrate our algorithms. Like we are getting the feeds and AI will process those feeds, computer vision algorithms, and it will solve some interesting problems. Like it has use cases in theft control. Like we can tag object of interest. If somebody tries to manipulate it, if that object of interest gets displaced, automated alert. Like it will be very good in like smart surveillance and like geo fencing. I'll show the demo also very soon. Wait, I'll do it one by one. I'll show the demo. Yeah, I'll be very fast. Yeah, so basically in theft control, we have some very interesting solutions like virtual fencing, wherein we can like some area of interest, we can just make a virtual fence. If somebody tries to enter that region, we can like alert, object tagging, automated alert, and face recognition also. So we did very good work in face recognition also. I'll show some demo. So just 1 minute, I'll share my entire window. Otherwise, I'm sorry for the delay. Yes. Hey, Mac, one quick question, right? So the idea what Nukul is presenting is pretty Yes. interesting. Is it possible we can give him more time, or if everybody agree, they can join back once the meeting is ending? Yeah, because we're pushing, I'm not sure, like either we just look at it, what he's just showing and maybe coming back next week or something. Like, I don't know. Leave it to you. Yeah. Uh, yeah. So as you can see here, I have like made this virtual fence. Now, if anybody enters that region, definitely he has to be a person in the odd time, like in the night hours. That intrusion detected, that message was there. So automated alert will be sent. So some more use cases I have. So like premises is there. If anybody is entering or exiting, all that we are tracking. We will be seeing that in this demo. Yeah, yeah, yeah. It is. And the good thing is that this solution actually we are building it together with IIT Kanpur. So there is a center
CDIS, Center for Development of Intelligent Systems, and in UP government there is something called as UPSIDA, Uttar Pradesh State Industrial Authority. So we will be deploying this solution for them. So the CEO of UPSIDA, we got an opportunity to show him some solutions specific to him in waste management. He loved it. So hopefully we will be very soon deploying it over there. Because this is something very interesting. Even Chinese cameras, they are not this much smart. Like they don't have such kind of a solution. To be very honest with you, we did a lot of market research in this. So, Nukul, so that is the use case you're telling me. So, can you tell me what infra you're using for this? Infrastructure. Mm-hmm. So sorry, sir. Like your backend and the infrastructure, like where are you hosting it? What kind of a backend you're using? Backend in the sense middleware and you know. Yeah. Yes, sir. So the idea is that we are making use of RTPS protocol, real-time streaming protocol RTSP, to get the real-time feed from the cameras, because all the CCTV cameras, they work on the concept that the real-time feed, it gets stored in the NVR DVR, and now we have wireless also. Earlier it used to be like wired NVR DVR. Now we have wireless also. So our algorithm, like our programs, they fetch the feeds real time using this real time streaming protocol, and they run on that. So we have made like pipelines. Now currently whatever solution like we are giving, it is more of uh, we are running it offshore. Like it's not fully real time. The idea is that let us suppose feed, we are storing it somewhere. We will click a button, all those feed will get downloaded, our algorithms will run it, and they will generate a report, and that report we will be giving to government authority. So, what Currently is the this is latency? What is the latency into it? Like between the real time and yes, sir. So the latency is around 6 hours, and they are okay with that, because now the problem with the government authority or like any uh, individual is that everybody is installing CCTV camera, like very big company is there, hundreds of CCTV cameras they have installed. What's the problem? Problem is that they don't have monitoring mechanism. Not like everybody cannot sit and watch whole day. They can miss many things. And here AI will play the role. Like hundreds of cameras, all the feeds, it is getting stored. Our algorithms are smart enough. Like particular use cases, they will they will just extract those use cases. If those incident occurred, it will extract a proof of it, and it will generate a good report, and that will add value, that will add real value to the CCTV surveillance. So that's the main idea. And definitely real time, we will be making it very soon, because the problem is there that like any data confidentiality, especially with government, they don't want to use any cloud service. They rather want key in-house server you build, there only let the processing happen. So all that we are figuring out how we can achieve that. But yeah, this is the thing. so so all the processing power is coming from your own server somewhere, or it's on the Azure, AWS, Google? Where is it? Right now it's our own systems, like GPU powered systems we are using, CPUs with the GPUs. Like we are not using any cloud as of now. Okay. Yeah. So for face recognition, I'll try to show, like we have time. One very interesting thing we have developed. It will load. Actually, we are into deep tech. So computer vision is our expertise, and also we are working in agentic AI, especially this large language models, RAG, chatbots. Definitely in coming weeks, I'll present those ideas also. Like we have built some good solutions over there. I'll just fatafat download one pic with some faces. So for the live demo. So meanwhile, when you're downloading, let me ask you out Yeah. that question is that
Look Yes, like it would be a case with most of the insurance kind of a claim and all that because it's 6 hours late, theft is done already. I cannot just see that what need to be done on the top of out of this analysis. मैं बाद में yeah, देख सकता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पर एट द मोमेंट रियल टाइम में मैं नहीं कर सकता हूँ. Just yeah, correct yeah. me if I'm wrong. Nee, it's a very, very good question. So the idea is that let us suppose theft occurred. Currently, whatever solution we have, उनको पीछे जाके मैनुअली करना पड़ेगा. Right. Like Like कोई भी इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी क्लेम के लिए या पुलिस रिपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए उसके लिए हेल्पफुल है. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. Okay. Like theft control is one use case. There are many more use cases we can derive as per that the context. So I'll just upload. सो ये नकुल Yes. इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लेकिन अब आपने जो शुरुआत में बोला था कि ये रियल टाइम हम दे रहे हैं, फिर ये Yeah. 6 आवर का डिले आ गया, तो Yeah. रिएक्टिव ही लग रहा है, प्रोएक्टिव कहाँ लग रहा है इस डिले? Exactly. Yeah. Nee, so yes, sir. Very. मैं आपको Yeah. एक छोटा सा बताता हूँ, मैं भी इसके बारे में काफी सोचता रहता हूँ. Yes, sir. जस्ट हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, राइट? Yeah. वहाँ पे भी लोग इंसिडेंट करते थे, छोटा सा इंसिडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपना कूड़े का डब्बा पहली बार रख दिया, उससे दे अट्रैक्ट मंकीज. ठीक है, अब वो खाली सरदर्दी हो जाती सबके लिए. अगर जैसे ही मंकी आया तो अलार्म बज जाए, गार्ड आ जाए वहां पे. अगर इस तरह का सोल्यूशन, तो वो रियल टाइम है. सिमिलरली अगर चोर चोरी करने से पहले ही पकड़ा जाए तो हाँ. बेटर है, rather than कि उसने ताला तोड़ दिया, अंदर घुस गया और फिर वो नहीं, that is possible, sir. That scope is नहीं, there. तो Yeah. वो आप कर पाए नहीं कर पाए, ये इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. अगर वो है तो डेफिनेटली That we have, sir. आप That कंप्लीट we have. कीजिए. मेरे ख्याल में आपके पास 1 ही मिनट है अभी. Yes, sir. So this actually I wanted to show. अभी मैंने सर आपके सामने एक ऐसे रैंडम पिक उठाई सर एंड अपने ऐप को दी, तो इसने सर करेक्ट एक्यूरेटली सर फेस डिटेक्ट किया एंड इसने सारे फेशियल फीचर्स सर एक्सट्रैक्ट कर लिए. अब हम इसको टैग कर देंगे कि फेस 1 बिलोंग्स टू दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन एंड वेरी like highly accurate face recognition we have built. But but all, So all of, but all of this like whatever you're talking about computer vision is always available on cloud. Like if you go Azure, AWS, yeah, they yeah, have they have block recognition, face recognition, everything is like just drag and drop system is there. So yeah. it is like already available. So what you are doing here? Very, very good question. But the thing is that if we have access to technology, we are not dependent on Google, Microsoft. We can build custom solutions out of it because Yeah, they're but building solution is not a problem. It is very easy. But from where you get the infra? Like you said that you will be detecting object of like thefted. So anyone can analyze a video later to find the block detection or object detection. But on real time, you need some infra yeah, to yeah, to process it to detect the theft real time, then send the yeah, alert. For yeah, that, will your app will show that thing in real time? yeah, Because yeah, it will require infra. If suppose if it's on premises object or app, so it will need GPU. If you're going to cloud, then still it will yeah. need GPU. Yeah, no, I got your point. Definitely in the coming meetings, I will demonstrate real-time solution, Pakka. And thanks for your valuable suggestion. Yes, sir. Oh, oh, Yeah, I'm okay, already definitely. joined actually. Let's join there. I'm already joined there. Yes, sir. I'll join over there. Yeah. Yes, sir.
Mine, thank you, man. I think his idea was pretty uh, good idea to look upon and talk about it. There are a few things um, which even like everybody was interested to add their own 2 cents into it, and already heated up discussion going on, and it was a good idea to extend it instead of going for next week and all. आप वो ग्रुप में भी डाल दीजिए सर। अच्छा ठीक है, फाइन फाइन। Yes, sir. So my question was that how you will do it on real time. Yeah, sir, very good question, sir. Idea is that, sir, real time, it's totally feasible. Many companies are How it is feasible? okay, sir. So the idea is that, sir, AWS you are talking about, they are basically using their own dedicated servers. That server we can set up in your apartment also. Like let us suppose there is a use case of a society. So you will be setting up server. Like we can set up server, we can make use of their services. So but how many server, how many How server many in how server? many apartment you will set up it? It is not feasible. Okay. Nee, Rather so than rather use cloud, run your app on cloud, use and use their GPU Mhm. and use it across the world. Actually, sir, right now what we are planning is that our business model, please correct me if I'm wrong, like it's my thought processor, like we are tying up with the distributors of CCTV camera. Like in Kanpur, we are already in talk with one of the top distributor. He has like clientage of big schools, hospitals, and since it's like completely new project for us, so what we will do, like if we tie up with one school, we will be giving them custom solution, and that is our USP. Like we will sit with the school No, and no. Why uh, you are targeting particular school or all this thing? You have to target the whole world, not one, two, two, nee, three. so No, no, problem. You know what's yeah, problem is that yeah. you have videos, Mhm. like video recording, right? Yeah. After that, you need to process this video with computer vision to detect the object there, right? Yeah. Yeah. And then send the alert. So Mhm. it should be real time. Yeah, real time it will For be. real time processing, you need strong GPU power, right? And Yeah. for that, your video should be immediately stored on the video on the server, then processed by GPU, then detected by object detection, then after send the alert. Suppose Yeah. there might be latency of 30 40 minutes if your GPU is a little slower, right? Mhm. So that is the way forward if you want to metalize it. And Nee, so I yeah. think and I think that thing can be done by any like any CP camera, any app they can do it. But No, processing right it, now they are not doing. no. It is very Actually, we simple. did very good It is research. All the like very HK, simple. Actually, it is very simple. nee, but might Face be it is very simple, but they face, are not face doing it. detection, Mhm. block detection, Nee, contour sir, detection. it's a All fact, this sir. all this is right now community in the Sir, machine learning. it's a fact, sir. Like in a city like Kanpur, or you go to big city also, sir. All the public places, sir, they have CCTV No, camera. no, no. I'm not talking about Kanpur. I'm not talking about India. Nee, but our Concourse vision and is not that. it. Yeah, I'm talking concourse and about not Yeah, the it. whole world. yeah. But What is happening? yeah, What is happening? yeah, The whole this thing is now community in the machine learning. yeah. It is As a deep now learning. community.
The point is that how it can be commercialized in the market. Yeah, yeah. The real pen is that processing that much of video that will Nee, require nee, so, lots so, of GPU. You know yeah, how much, you know when there was Ghibli. Right now you hear na Ghibli formation of like those on GPT. Their GPU was burning. yeah, To yeah. processing those videos, it will cost too much. Nee, sir, 1 point, sir, sorry. Like, let us suppose if I focus on a school, sir, with 100 CCTV camera, for example, very big, very easily, sir, one good CPU installed in the premises can handle real time. This we have, sir, already tested. It's possible because we will not be doing frame by frame. Rather, we will be doing minute by minute. That our algorithms, we are rather optimizing it more. So processing we will. So sir, our vision is this, like business model also. Like we will be tying up with some big players like schools, hospitals, and once model is successful, software as a service, second school, third school, like earlier I think ERP solution was there. Yes, sir. Sorry. I think the most feasible solution for this business is Yes. that there are those who sell their video recording machines. Yeah, yeah. The GPU should be installed in that machine. It's the most best way to Mhm. go ahead, and thereafter they will detect. They will send all everything. Like what right now we were just Yeah. storing our video. Now we Yeah. need to process it. So yeah, yes. Yeah. Sorry. Yeah, yeah. Yeah, Yes. and thank you for giving opportunity floor to me. Nicole, Mm. your idea is wonderful, and it doesn't apply specifically to you. It's across the board to anybody who is into entrepreneurship. Yes. See, the thing is that it's not a project that you are working on. It is a business idea, and the idea which is feasible and profitable. So what in my experience as a mentor I have seen Yes. many people, they develop an idea and then they get married to that idea, thinking that this is the best idea. Yes. Going by your philosophy, I would suggest that you do a little more research into what is there in the market, what is selling, and how your idea is differentiated from the others. Yes, sir. Not exactly that yours is going to be the most visible. You talked about a school, that it can work in a school, but your enterprise will not break even by any school. You need more avenues, more opportunities Yeah, yeah. to make it commercial. So I would suggest not only you, I mean, anybody who is thinking on these lines to think of the technology part. Second is that profitability and competition. What you are and what others are already offering. See, Yeah, yeah. I was listening to Sanjay ji and others that infra wise you may not be able to compete with people like Motorola or people like Hikvision. So, having said that, since you are making a beginning, your idea should be sellable. It should be crisp and marketable. Yes, sir. Uh, Devoid of these parameters, I think Mr. Mank will also agree to that. That devoid of these parameters, it will be very difficult to sustain in the market. Yes, sir. So I'll request you to
uh, uh, brainstorm little more on these aspects in addition to your technology. Yes, sir. Okay, okay, okay. Thank you and all the best. Thank you, sir. Thank you. हेलो नकुल सर। Yes, yes, Animesh. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं इससे हम क्या रियल टाइम अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि वो सर जो कंसेप्ट है, या प्लीज क्योंकि सर अराउंड हमारी क्लास जो होती है मान के चलते 50 मिनट की होती है, तो उसमें हमें रियल टाइम की भी नहीं, हमें एक क्लास के बाद अटेंडेंस चाहिए। कानपुर यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट पे पूरा वर्क कर रहा है और उनके पास एनवीडिया के सर्वर भी हैं। राइट नाउ हम एक बंदे को जानते हैं, आयुष कटियार, जो ये पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहा है सी फॉर सी एस यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। तो अगर हम ये चीज कर सकते हैं तो हम वो उनको उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम कोलैब कर सकते हैं। अभी एक आकाश का सेंटर है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसके जी ओनर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो आइडिया ऐसा है कि विद दिस कैमरा लाइक एआई, अच्छी चीज ये होगी कि लेट अस सपोज टीचर पढ़ा नहीं रहा है, ही सिटिंग, जी और कोई जो भी एक्टिविटीज हो रही है, इट विल बी लाइक अ जी जी थर्ड आई, और एआई विल कीप ऑन वॉचिंग एंड नोटिंग इट सम अनवांटेड इवेंट्स, एंड वो पूरी रिपोर्ट देगा ओनर को या जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगा। दैट्स द आइडिया। एंड हम कर सकते हैं ये सोल्यूशन, आप कनेक्ट कराइए। हाँ, ओके इस आइडिया पे जो भी आपने बताया इस पे तो जी। AWS के साथ काम कर रहे हैं वो। आई नो somebody who's working in it with Akash. हम्म, या थैंक्स बैंक। राइट बिल्कुल। इसमें मेरे दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि अ, हमने जो भी वीडियोस देखी हैं, मूवीज वगैरह भी देखते हैं, राइट, जो आपने दिखाया, राइट, ये यस सर। सब फेस कैप्चर और रियल टाइम इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से काफी हद तक लाइव स्ट्रीमिंग में उसमें पकड़ में लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखी है। व्हेन यू से कि ये कैमरास वैमरास में नहीं किया हुआ, हम्म, I think that's difficult, right? So I want to give you a chance to explain that कि how do you say कि cameras के through ये नहीं हो रहा, solution what या you have is way better. सर वेरी गुड क्वेश्चन सर। अभी जितना सर हमने रिसर्च किया है, सर कैमरा में डेफिनेटली फीचर्स हैं Mhm. सर। मोशन डिटेक्शन हो गया, सो इट विल ओनली स्टोर दोज फ्रेम्स वेयर मोशन इज डिटेक्टेड। And दे the आर आल्सो, and the face recognition also, right? so it's there sir, I totally agree with you, but the problem is that sir it is generic, and Okay. this domain is something wherein customization has a very big potential. अब जैसे फॉर एग्जांपल सर, ट्रू व्यू कंपनी है, हमने उनके काफी हायर लेवल तक बात करने की कोशिश करी कि कुछ कस्टम, दे कंप्लीटली डिनाइड, नो स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन, एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ऑल द सीसीटीवी मार्केट, there are very smart cameras with AI, but generic. Yes, sir. That's the Okay. idea. All right. So you're saying कि फोटो कैप्चर, फोटो फ्रेम कैप्चर हो गया, फेस रिकॉग्नाइज हो गया, Yes, yes. right? So if I put a red alert on a face, Mhm. cameras are catching it at this moment. Yeah. So it's the same as you, right? Yes, sir. तो Uh, that is called as sir object tracking. तो एक बार हमने एक ऑब्जेक्ट को सर आइडेंटिफाई किया, एंड वी विल ट्रैक इट, वो क्या कर रहा है। दैट आल्सो वी हैव डेवलप्ड, सो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, that's a good ऑब्जेक्ट one. ट्रैकिंग। Yeah. So I think till the point that face recognize कर रहा है, सब कुछ तो हो चुका है, right? Yeah, If there's a red alert or something, so they can capture the face recognition से they can send the alert. Now you're yeah, saying कि you can take it further कि जिसमें कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं. The person is going from one hall to another hall or maybe third hall or maybe going around the premises, and now you can say like this is the red alert face and this is where he's going. Is it? yeah, Okay. definitely, sir. That we have. And sir, we have something even more interesting, sir. That is called as pose estimation. I'll try to show it. And it can be, sir, very useful in, sir, office setting.
I think in a big data centers, this can be a good way. The data security is very prevalent. जहाँ Yes. पे कोई पर्सन अगर डाटा सेंटर में अगर एंटर होता है, he can be employee, he can be intruder, right? So anybody Yeah, एंट्री yeah. होने के बाद we can track him कि ये कौन था, कहाँ आया और कैसे कैसे कहाँ गया, right? After that we can just figure it out कि ये कौन था बंदा, right? So right. Yes, sir. Definitely. That is a very powerful use case. सर एक मैं रियल आपको दिखाता हूँ सर ऑफिस का। So एंड you saying सर that यस, let me help you यस, here. So you're saying कि अगर मैं आपके सिस्टम में रेड अलर्ट में 2-3 पिक्चर डालता हूँ कि यार ये लोग प्रीमिसेस में एंटर नहीं होने चाहिए, if they any time enter I wouldn't know it. So you can help us to track it basically कि ये पर्सन कहाँ कहाँ गया था इसके बाद the moment they entered only for those people, right? या Automatically. व्हाट एक्टिविटीज ही डिड। अब जैसे कि इट्स लाइक अ रियल कैमरा रियल टाइम सॉल्यूशन इट इज सर। It is first it identified all the like humans, and now like it is tracking it. So this person he's walking, it's tracking it continuously, Okay. and it's also telling the pose. Like now he is standing, and when he will kneel down, it will identify that. Like we are enhancing it. There is a scope of enhancement for sure, but this can be a good thing. Like let us suppose in an office setting, if somebody is missing, because attendance is like one time in the beginning, biometric attendance done. Now he entered. After that, what? So this will be more precise, wherein we will continue. AI will continuously watch, and if somebody is not sitting, it will tell for how long that person was not there. That Okay. employee. So my next question is about the geographical limitation जो बताया कि कानपुर में हम लोग जा सकते हैं स्कूल में, तो लोकल टारगेट करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। So Nukul, Yes. can you have it installed in New Jersey, USA? अभी वो कैसे करोगे आप? Yes, sir. So definitely, sir, it's possible. We can जी, आपका तो do सर्वर it. बेस्ड है अभी, यहाँ पे सर्वर लगाया कौन, मेंटेन कौन करेगा, मुझे सपोर्ट चाहिए कल को, कौन आगे क्या Yeah. करेगा उसमें? Yes, सर उसमें सर मैं एक इनपुट दूंगा सर। जो हम एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं सर मॉडल्स, it's based on a latest thing you might have heard about it, YOLO. You only look at once. Sir, it is very lightweight. अगर सर मैं डीप लर्निंग लगा रहा होता सर, देन आई वुड एग्री कि मुझे बहुत हाई जीपीयूज की आवश्यकता पड़ती, बट जो हम कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस बना रहे हैं सर, इट्स वेरी लाइट वेट बिकॉज हम योलो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एवरीबडी इज यूजिंग इट। इट्स वेरी लाइट, एंड इवन सर रास्पबेरी पाई या जो अब आपने जेटसन कहा, उसके अंदर भी सर एज कंप्यूटिंग लाइक विद सीसीटीवी, लाइक आई थिंक 5-6 सीसीटीवी दे आर इंटीग्रेटिंग वन Jetson, and that device is able to process it. So that is so that much lightweight. So and we are also trying to further optimize it by using like rather than processing frame by frame per minute. नहीं नहीं Or नहीं, again, okay okay, so yes, I think your answer took me somewhere else, right? मेरा let's stick to the question. मेरा question ये था कि geographical limitation में I want to install server at my place, how will you do it? Because अभी तो server based है, hardware चाहिए, right? संजय ने सही point out किया था, मैं I'm in favor of what संजय said yeah, yeah. कि आपका जो solution मुझे भी ऐसा लगता है, right? You can differ, right? So हम लोग तो कुछ ऐसा Yes, suggest कर रहे हैं कि maybe you are intelligent enough, right, to already figure it out कि हमने क्यों नहीं किया, but looking from outsider I see that अगर आपका बिजनेस, राइट, अगर आशु जी ने बोला ना स्केलेबल होना चाहिए, yes, स्केल करना है मुझे, कल को अगर आप बोलते हो कि मेरे पास 1000 कस्टमर अगर आते हैं, इफ यू मान लिया कि आपका सोल्यूशन बहुत अच्छा है, ऑल ओवर वर्ल्ड थोड़ा सा नाम हो गया, आपने कल के वायरल हो गया, जैसे चैट जीपीटी वायरल हुआ, मिलियन यूजर आए, तो आपके पास मिलियन नहीं आए, आपके पास 100 यूजर आए, वायरल हो गया, और 100 यूजर बड़ा अच्छा आइडिया, 100 कोई खास बड़ी बात नहीं है। अभी 100 को आप इमीडिएटली कैटर कैसे करोगे, बिकॉज यू yes, हैव सर्वर इंस्टॉलेशन, दिस थिंग yeah, दैट yeah. थिंग, Hey, अभी so ऑनबोर्ड करना है, हाउ yes. हाउ ऑनबोर्डिंग विल बी स्मूथ आउट? Yes, sir. So, sir, definitely, if we get an opportunity to scale in the US market, we will go with the cloud solution as suggested by you. कि हम एग्जिस्टिंग जैसे लोकेश सर ने भी डिस्कस किया था कि AWS
का हम तो डेफिनेटली हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे बिकॉज़ हम सर जो पूरा हमारा सॉल्यूशन है पाइथन में है पूरा कोड एल्गोरिदम्स एंड लाइट वेट मॉडल है तो जो भी वर्चुअल मशीन लाइक डेवऑप्स लाइक डॉकर इंस्टॉल करके उस पे हम पूरा रन करेंगे एंड नहीं, उस इट केस में अगर आपको जीपीयू भी एक्स्ट्रा चाहिए, राइट, हम्म इट्स स्केलेबल। आपको स्केलेबल जरूरत ही नहीं ध्यान देने की मुझे सर्वर लगाने लगाना, इट्स नहीं, नहीं, ऑटोमेटिकली स्केलिंग अप वी एंड आर अप ओपन एंड फॉर दैट, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग बिकॉज़ सर ये इसीलिए था सर क्योंकि सर इंडिया का मार्केट सर आप जानते हैं स्पेशली कानपुर जैसी सिटी का कोई भी सब चाहते हैं कि सस्ते में काम हो जाए। हम भी चाहते हैं कि 2 पैसे बचे सस्ते तो इसीलिए उनके लिए जो डेडिकेटेड सर्वर होगा ना दैट विल बी द चीपेस्ट सॉल्यूशन बिकॉज़ वन टाइम एक So इंस्टॉल कर दिया हमने। I'll give यस, you one quick advice here, right? यस सर। इंडिया में कंपनीज ऐसी हैं जो एसएपी इंस्टॉल करती हैं। एसएपी की एक इंस्टॉलेशन 8 से 10 करोड़ रुपए की लगती है। दे आर स्पेंडिंग मनी। इफ यू ओके, टारगेट लो यू विल स्टिक इनटू दैट डोमेन। अब वहीं घूमते रहोगे, उसकी मेंटेनेंस इतनी भारी पड़ जाएगी आपको, यू वोंट बी एबल टू कम आउट, राइट? एम फॉर डेफिनिटली हाई, सर। एम फॉर हाई, लो अपने आप। अगर एक बार आपका नाम हो गया वो भी लेंगे ना, बिकॉज आपका जो सोल्यूशन है दैट इज बाय यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी कंपनी यूज कर रही है, ज्यादा यूज कर रही है जीपीयू, उसके हिसाब से चार्ज करो। छोटी कंपनी है वो छोटा यूज कर रही है, उसको छोटा चार्ज करो। वाई यू वांट टू स्केयर देम ऑफ कि यार आपको तो ना एक महीने का 10 लाख रुपए पड़ेगा, वो नहीं करेगा। आपने कम यूज किया, एक महीने का आपको 2,000 पड़ेगा। बड़ी कंपनी यूज कर रही है उसको 5 लाख पड़ेगा। इट्स फाइन। नहीं दैट्स हाउ डेफिनेटली यू शुड सर डिजाइन। बिल्कुल सर देयरिन सर आपका बहुत एक प्रीशियस रोल होगा सर जो आप मेंटरिंग करेंगे बिकॉज सर टेक्नोलॉजी वाइज सर हम आप जो बोलोगे सर हम कर देंगे सर क्योंकि टेक्नोलॉजी का अपने को अच्छा एक्सपीरियंस है सर 10 साल से हम लगे रहते हैं Really, I like your answer, the way you are explaining things. It means you have a deep control on the technology what you're implementing. या Last क्या कि why I was so much interested asking so many questions. I'm also working on a similar kind of a concept. ओ उसको वाह हम लोग बोलते हैं visitor management system. तो visitor management system is AWS based out of it. उसमें AWS recognition वगैरह को उसका आर्किटेक्चर हमने पूरा बना के रखा हुआ है. Right. I will talk to you more on that. So see डेफिनेटली if you can help me on that, or maybe collaborate, maybe join, or whichever way you think. या But सर before I start of discussion, just reach out to me and I'll discuss more with you. डेफिनेटली सर आई विल रीच आउट टू यू या यू नो वेरी नाइस I, So, Mike, I would like to add one more thing into it before I give it back to Nukul, right? Just to close my statement. जो visitor management system है, that is a managing the visitor. यूएस के अंदर बहुत बड़े बड़े यार्ड होते हैं, राइट? सो व्हाट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। डेफिनेटली बड़ा सोचोगे छोटा कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। छोटे में घुसोगे ना, वो इतनी चिंदी चोरी होगी उसके अंदर, आप फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे उसमें से। सो डोंट डू दैट। डेफिनेटली सर दैट्स वी व्हाट, आर रेडी फॉर दैट राइट? जैसे आशु जी ने बोला, राइट, और भी यहाँ पे लोग हैं, सो दे आर इनडायरेक्टली टेलिंग द सेम कि आप बड़े को, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया जिसके किसका एग्जांपल था, नोकिया, किसका एग्जांपल लेता है, फॉरगॉट अबाउट दैट। मोटोरोला मोटरोला का एग्जांपल दिया था, राइट? मोटरोला से अगर आप compete करने बैठोगे सर्वर बेस में compete नहीं कर पाओगे। आपको डेफिनेटली स्किल देना कि यार हमने ना जियो को सोल्यूशन दिया, जैसे एग्जांपल, ऐसे आई एम मेकिंग इट अप, आई वांट यू टू जस्ट डू वेल। तो मान लिया जियो ने कल बोला, तो मोटरोला भी आते हैं कि हम भी दे सकते हैं। पावर वाइज मोटरोला, यू कैन बीट मोटरोला। सो द ओनली वे यू कैन बीट मोटरोला इज गेट ए स्केलेबल सोल्यूशन ऑन ए क्लाउड। जब बोलोगे या यार आज हमारा ये सोल्यूशन है, बड़ी लो कॉस्ट है क्योंकि यूज नहीं है। जियो बोलता है जियो हम लोग यूज करें, करो यूज, स्केल हो गया, उसी हिसाब से स्केल हो गया, आपका सोल्यूशन चेंज नहीं हुआ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस टर्म्स। तो कमिंग टू द पॉइंट कि दूसरा था कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन जो मैंने रेज किया। यस सर यूएस में जो यार्ड्स होते हैं दे आर 6 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ के यार्ड होते हैं यहाँ पे।
Yeah, तो yeah. वो यार्ड में जो फेंस मॉनिटरिंग होती है दैट हैपेंस इन रियल टाइम, Okay, nice. राइट? तो इंट्रूजन कहीं से भी हो सकता है, इतना बड़ा यार्ड मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लोगों को लगाना बहुत मुश्किल है, और दे आर इन Mhm. रिमोट एरियाज आल्सो एट द सेम टाइम, दे आर नॉट इन इंडिया की जो सिचुएशन है वो अलग है। नाउ यू सेइंग कि इंडिया में लोग पे नहीं करते हैं, ओके देन Mm. टारगेट द ऑडियंस वेयर यू गेट द मनी, डोंट Yeah, yeah. target the audience just for the heck of proving your technology. If you have already control on the technology, target the big money. You get a chunk out Totally of it. agree. You need to support yourself. You need to make money end of the day, right? Definitely. छोटे वाला आएगा साथ में। तो वो जो आइडिया था विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड यार्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट दैट। Already Mm. have something going on, right, with few people. Idea started on that, and I'm lucky I was here listening to you. Thank you. Yeah, definitely, sir. I'll get in touch with you and we'll take it forward. Sir, I think you're muted. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.